अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट ग्रेशियस। आज हम फिर से शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, जिसकी ज़ात नहायत ऊंची है, जो बहुत ही मेहरबान है और जो सबों पर मेहरबान है। टुडे वी हैव टू डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो हमने सम निकाला था a प्लस b इक्वल टू r। अब r की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो वी विल डिस्कस हियर डायरेक्शन ऑफ r, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज वेक्टर a रिप्रेजेंटेड बाय वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दिस इज वेक्टर b रिप्रेजेंटेड बाय other side of a triangle, and the third side of the triangle taken in opposite order represents the resultant of these two vectors. Now how we calculate the direction of this order? In which direction the resultant of a and b acts? ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, like this. When the angle between these two fingers is equal to 0, they act in same direction. They act in same direction. When the angle increases, this finger acts in other direction. This is in this direction and this finger points in other direction. एंगल के हिसाब से एंगल जितना चेंज होगा उसी हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जब एंगल होगा 90 डिग्री तो डायरेक्शन इस साइड में होगी इसकी। समझ आया ना बेटा? यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ एंगल। डायरेक्शन ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, वी ड्रा अ परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका हमने नाम रखा था एल एम एन, और यहाँ से एन क्यू एक परपेंडिकुलर हम डालेंगे एल एम पे, इसको प्रोड्यूस करेंगे क्यू तक। क्लियर? ये वाला एंगल था थीटा। अब हम बोलेंगे लेट द रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद दिस वेक्टर ए। अब हम एज्यूम करेंगे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ना, इनका ए और बी का, ये कितना एंगल बनाता है ए के साथ? अल्फा। से इट फॉर्म्स एन एंगल अल्फा विद ए। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। जब हमें अल्फा का वैल्यू पता चलेगा उसी हिसाब से आर की डायरेक्शन होगी। क्लियर? समझ आया? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल एल एन क्यू, इन ट्रायंगल एल एन क्यू, in triangle L and Q, we find the value of tan alpha. इसका वैल्यू हम निकालेंगे बेटा, tan alpha का वैल्यू हम निकालेंगे। tan alpha will be equal to what? Perpendicular upon base. Perpendicular upon, what is perpendicular here? NQ, है ना? Perpendicular is NQ upon what is base? It is LQ. Base is LQ, which implies tan alpha will be equal to NQ upon LQ के बदले हम क्या लिख सकते हैं? LM plus MQ, LM plus MQ, which implies tan alpha will be equal to NQ. NQ का वैल्यू हमने निकाला था, it is B sin theta। निकाला था हमने वैल्यू, it is B sin theta अपॉन LM का वैल्यू है बेटा A, इट्स इक्वल टू A। खाली हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे A प्लस MQ का वैल्यू हमने निकाला था B cos थीटा। वी कैन राइट B cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। जब हमें tan अल्फा का वैल्यू मिलेगा हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं वो मैं यहाँ पे अब डिस्कस करूंगा। अल्फा का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, लेट बी इज इक्वल टू √2 एंड ए इज इक्वल टू से 2। क्लियर? Therefore, tan alpha will be equal to what? B के बदले हम लिखेंगे √2 sin 45 डिग्री अपॉन A के बदले हम लिखेंगे 2 प्लस B के बदले √2 एंड sin थीटा के बदले 45। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे tan अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए।
तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू √2 sin 45. Sin 45 is 1 by √2. Sin 45 is 1 by √2 upon 2 plus √2 into sin 45 is again 1 upon √2. √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो which implies tan alpha will be equal to 1 upon 2 plus 1. 2 plus 1 is 3. तो ये निकलेगा हमें tan alpha का वैल्यू. अब अगर हमें अल्फा का वैल्यू निकालना होगा तो we can write अल्फा इज इक्वल टू, ये जो tan इस साइड से है, इस साइड से जब हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे इट बिकम्स tan इनवर्स. इट बिकम्स tan इनवर्स, नहीं cot नहीं, tan इनवर्स 1 upon 3. अब tan इनवर्स 1 upon 3 का वैल्यू हम यूजिंग कैलकुलेटर्स निकाल सकते हैं. यानी किस एंगल पे tan का वैल्यू 1/3 आता है, किस एंगल पे tan का वैल्यू 1/3. जैसे sin 45 is 1 by √2. Sin inverse 1 by √2 will be 45 degrees. Clear? If tan alpha is equal to 1 upon √2, 1 upon √2 अगर tan alpha आएगा तो अल्फा का वैल्यू आएगा tan inverse 1 upon √2. इसी तरह अगर sin का वैल्यू हमें पता है, sin alpha is equal to say 1 by √2, तो अल्फा का वैल्यू हम लिख सकते हैं sin inverse 1 by √2, तो अल्फा का वैल्यू वहां पे 45 आएगा. इस तरह साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हम यूज कर सकते हैं, हम tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से आपको अल्फा का वैल्यू मिलेगा. क्लियर? जब आपको अल्फा का वैल्यू निकलेगा, सपोज इट इज से 60 डिग्री, तो हमें पता चलेगा जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पे इट एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ए के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री. तो जब हमें पता चले दैट कि अगर यहाँ से ए है और ये आर बना रहा है 60 डिग्री ए के साथ, तो हमें डायरेक्शन ऑफ आर पता चल सकती है, ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है. क्लियर? इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर. इस मैनर में हम किसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं? आर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. क्लियर? अच्छे से समझ आया? नाउ वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में भी और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी. मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ unlike scalars में जब हम multiplication बोलते हैं we simply say 2 into 3 is 6, we simply say 5 into 7 is 35. But in case of vectors we discuss two types of multiplication, also say product of vectors. There are two types in product of vectors. One is known as scalar multiplication and another is known as vector multiplication, or in other words one is known as dot product of two vectors and another is known as क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्लियर? समझ आया? देखो बेटा, अगर हम स्केलर्स की बात करेंगे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2 into 3 इट इज इक्वल टू व्हाट? 6. अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2 dot 3, डॉट को भी हम ट्रीट करते हैं एज मल्टीप्लिकेशन, इट्स अगेन इक्वल टू 6. हाउएवर इन केस ऑफ वेक्टर्स दिस क्रॉस एंड दिस डॉट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. अगर मैं बात करूंगा लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, अगर मैं बात करूंगा ए डॉट बी की तो इसकी एक मीनिंग है. अगर मैं बात करूंगा ए क्रॉस बी की तो इसकी अलग मीनिंग है. दैट मींस इन केस ऑफ वेक्टर्स ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी इट्स नॉट वन एंड द सेम थिंग. ये एक ही चीज नहीं है. ए डॉट बी अलग चीज है और ए क्रॉस बी अलग चीज है. समझ आया बेटा? अब मैं पहले डिफाइन करूंगा ए डॉट बी को. How we can define dot product of two vectors. Clear? We assume that A and B are two vectors and they are acting at an angle of theta with each other. Means this is vector A and this is vector B. Let theta be the acute angle between the two vectors. Let theta be the acute angle between the two. Then the dot product of two vectors is defined as it is equal to
magnitude of A, the magnitude of B, and cos of acute angle between these two vectors. That means A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B, cos of theta. Clear? समझ आया ना? For example, A is a force and its magnitude is say 2 Newton. The magnitude of A is, the magnitude of B is say 3 Newton. And the angle between these two vectors, that is theta, acute angle between these two vectors is equal to say 60 degree. इनके दरमियान हम angle कितना लेंगे? Then how we can define A dot B? Then A dot B is defined as magnitude of A, that is 2 Newton, into magnitude of B, that is 3 Newton, and cos of acute angle, cos of theta. What is cos theta? It is cos of 60 degree. Clear? So it will be equal to 2 3 are 6 into cos 60. Cos 60 is 1 by 2. Cos 60 is into 1 by 2. 2 1 are 2 3 are. It will be equal to 3. Now it's not like scalar. अगर scalar product हम करते तो it is 2 into 3 6 Newton. But here it is dot product of vectors. It is 2 into 3 into cos of 60. It comes out to be 3 Newton. Clear? अच्छे से समझ आया ना? अच्छे से clear हुआ सबको? It is dot product of two vectors. Now we take dot product in terms of rectangular components of two vectors. अगर इनके rectangular components दिए होंगे, rectangular components हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था. What are rectangular components of two vectors? Suppose A is equal to 2i cap plus 3j cap and B is equal to 4i cap plus 2j cap. Now there are two ways for finding A dot B. One method is we can find the magnitude of A, we can find the magnitude of B, and then we have to know what's the angle between A and B. After that we make use of formula A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B, and cos of acute angle between them. But there is another way of finding A dot B. There is another way of finding A dot. What's the method? We can write A dot B. It is equal to 2i cap plus 3j cap into 4i cap plus 2j cap. Now how we will multiply? It is simply equal to, ध्यान रखो बेटा यहाँ पे कैसे मल्टीपल करना है. A dot B कैसे निकालना है हमें यहाँ पे? I कंपोनेंट को I कंपोनेंट के साथ मल्टीपल करना है और J कंपोनेंट को J कंपोनेंट के साथ मल्टीपल करना है. यहाँ पे I कंपोनेंट क्या है? 2. यहाँ पे I कंपोनेंट क्या है? 4. 2 4 are 8. What is I dot I? I dot I will be 1. It will be 1. Why? The magnitude of I is 1. It's a unit vector. The magnitude of unit vector is 1. So 1 into 1 is 1. So it comes out to be 2 4 are 8. Plus, similarly 3 2 are 6. J dot J is 1. So we can write 8 plus 6 is equal to 14 units. आएगा वैल्यू किसका? A dot B. इस मेथड से भी निकाल सकते हैं. We can use A dot B equal to magnitude of A, magnitude of B, cos of theta. अगर एंगल पता नहीं होगा तो we can directly make use of this method. 2i plus 3j into 4i plus 2j. It comes out to be 2 into 4 is 8 plus 3 into 2 is 6. It comes out to be 14 units. Clear? इसे समझ आया? Suppose we have to do dot product of I dot I. We have to do I dot I. I dot I किसके बराबर आएगा? Now you know that unit vector I cap acts along x axis. तो इस डायरेक्शन में होगा I cap. अब दूसरा भी I cap ही है तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. Now the angle between these two unit vectors will be 0 degree because they are acting in the same direction. Therefore we can write I dot I cap is equal to magnitude of I, that is 1, into magnitude of I, that's again 1, into cos of acute angle between these two vectors. It is 0 degree, so we can write cos of 0. It comes out to be 1 into cos 0 is 1. So we can say I dot I is equal to 1. Similarly, we can write J cap dot J cap. It's again equal to 1. Similarly, we can write K cap dot K cap. It will be also equal to 1. Now, if we have to find I cap dot J cap,
I cap dot j cap. The magnitude of I cap is 1. The magnitude of j cap is also. Now what will be the angle between I and j? It will be 90 degree because j cap is acting along y axis. The angle between the two will be. So we can write cos of 90 degree. Now cos 90 is 0. It comes out to be 1 into 0. It comes out to be 0. Therefore we can say the dot product of same two unit vectors, it is equal to 1. But the dot product of two different unit vectors, it is equal to 0. Clear? Yes, sir. Similarly we can write I dot k. It will be 0. Similarly we can write k dot j cap. It will be also equal to 0. Clear? Is it समझ आया? Now we will discuss the properties of dot product of two vectors. Before discussing properties, you have to remember it's also known as scalar product. You know why? When we take dot product of two vectors, we get a scalar quantity. We get a, like here, A was force of 2 Newton, B was also a force of 3 Newton. When we multiply it, it does not remain a vector quantity. It becomes a scalar quantity. We get simply a number 3. Clear? This 3 does not give us direction, in which direction this force acts. It only gives the magnitude of this force, that is 3 Newton. That's why this dot product is also known as scalar product of two vectors. It's also known as scalar product of two vectors. Now we will discuss the properties of this dot product of two vectors. What are the properties? Properties of dot product. Properties of dot product of vectors. First property you have to remember that dot product is commutative. Dot product is